wherever necessary. And yeah, we'll start in 5 minutes. But if I'm audible, if I'm clear, and if the noise that is coming, if it is not too disturbing, please let me know. If it is too disturbing, also let me know. Maybe we will not be able to do anything about it though. Okay, so Raghav is here. Hey, hi Raghav. You're from Pune. Welcome. Is this session to learn leadership qualities? Yes. So we may not point out around a few specific what leaders do or what you should do as a leader while managing a team or while managing projects. We may not go to into those kind of details. But what we will learn today is that how leaders take care of their own selves, how they take care of their own self-awareness, and how do they meditate. Because when there is self-awareness, and I've done a stream in the past about it, that when there is self-awareness, there are a lot of qualities. There are a lot of there's a lot of talent, there's a lot of skill that we have, and when we are not aware, that is like covered under some kind of a dirt. And when our self-awareness rises, we are able to see uh, all that all that good stuff that we have inside. And yeah, that is what will help you also in having that intuition, in having that compassion, in being an empathetic leader. If you're empathetic towards yourself, if you are compassionate, that compassion is coming from inside you. How do you develop it? That is what we are going to talk about today. But apart from talking about that stuff, we are going to be practicing. We are going to learn to how to meditate firstly, and how to meditate in 5 minutes first, that one. And it's just not about learning, getting that experience. What we'll try to learn within half an hour is that what are those key fundamentals about meditation that you can impart to your own team, how you can conduct mindful meetings. But before doing any of that, you first need to learn, to be able to experiment, to be able to experience that on yourself. So yeah, this is all that we'll do. Um, okay, hi Srinathan, hi Gayatri. Okay, audible, thank you. Gayatri, I'll tell you why the 5 minute mark. Um, that's a very good question. Thank you for asking it because it really sets the context. Um, I'll just say hello to the other people and come to it. Hello, Prabhas. Hello, Jyotish. Jyotish is saying, I'm not a leader, but would like to very much become one. Great. Isn't meditation about losing track of time? Gayatri is saying, true. Then why the 5 minute mark? Srinathan is saying, yes, true. Okay, so I think we are anyway on time, and let's start with what Gayatri has made a terrific point, that isn't meditation about losing track of time, and why are we putting marker like 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, that kind of stuff. So what I will reference here, just to not just say that what I think. Let me reference the highest authority on meditation that is there in our scriptures. That is our Yoga Sutras. तो आपने सुना होगा that there is a eightfold path towards meditation. It's like a step by step on how you can achieve samadhi, the highest goal of meditation. तो उस समाधि के स्टेप पर आने से पहले अगर हम उससे पहले आए, आई विल टेक द नेम्स व्हाट आर दोज 8 स्टेप्स. सो दोज 8 स्टेप्स आर, आपने सुने होंगे, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना एंड समाधि. समाधि से पहले जो मैंने दो नाम लिए हैं, वो जो दो नाम हैं, इनफैक्ट तीन नाम, प्रत्याहारा, धारणा, dhyana. So Gayatri, what the
kind of losing track of time, the kind of meditation that we are talking about, that is called dhyana. And what I'm going to talk about today is pratyahara and mainly dharana. What is pratyahara? Pratyahara is making your senses, what are your senses? Your eyes, ears, nose, sense of touch, sense of taste, making all these senses inwards. भाई मेडिटेशन में जाने से पहले आपको अपना जो बाहरी वर्ल्ड है, जो सेंसेस आपको बाहरी वर्ल्ड के साथ एंगेज करा रहे हैं, ये तो आप पहले डिस्कनेक्ट करोगे, राइट? दैट डिस्कनेक्शन नीड्स टू हैपन, दैट इज वन। तो वो है प्रत्याहारा, कि वो आप जब डिस्कनेक्ट करके उसे इन्वर्ट करोगे, तब जा करके आप एक उस अपने एक स्टेज सेट करी है दैट नाउ यू आर गेटिंग रेडी फॉर मेडिटेशन। Then the next step comes, which is dharana. Dharana is a forceful effort that you keep on taking to concentrate your mind on a specific object, mostly breathing. ब्रेथ पर हम बोलते हैं ना कि ब्रेथ पर फोकस करो, इनहेलेशन देखो, एक्सहेलेशन देखो। So dharana is something, pratyahara and dharana is something that we are going to talk about. So why not dhyana? Because dhyana जो है, ध्याना की जो डेफिनेशन है, जो मेडिटेशन की डेफिनेशन है, इट इज एन effortless concentration, that you do not have to put an effort. That is where you lose track of time. क्योंकि आप अब समय के हिसाब से आप एक किसी समय में नहीं हो जहां पर आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके थॉट्स, कोई नया थॉट आता है, you get distracted, you engage yourself, then you bring back toward your attention towards them. You engage yourself, you bring back your attention to breath. वो धारणा। Dhyana is effortless concentration, and dharana is forceful, repetitive effort to concentrate your mind on one object. तो 5 मिनट या 10 मिनट का टाइमलाइन डालने का उसका रीजन ये है, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान को अचीव करना कोई इजी टास्क नहीं है। एटलीस्ट करंट वर्ल्ड में जिस तरीके से हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिस तरीके से वी हैव ट्रेन्ड आवर माइंड्स टू बी लेस अटेंटिव, टू बी मोर डिस्ट्रैक्टेड, it is very difficult to be able to concentrate your mind and to be able to bring it into a state of dhyana, meditation. तो मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट मेडिटेशन इसलिए बोल रहा हूँ, I did not use the word 5 minute concentration or 5 minute pratyahara just for the reason कि उससे आप लोगों के लिए शायद समझना मुश्किल होता है, क्योंकि मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली ही यूज करते हैं, डिफरेंस है। But in my title, I didn't want to confuse you or specify that. So very good question on that part. मेडिटेशन तो एक रिपीटेटिव प्रैक्टिस, जब आप 10 मिनट्स करोगे, 15 मिनट्स करोगे, एंड योगा सूत्रास में लिखा भी हुआ है कि वो एक एफर्टलेस जो कॉन्सेंट्रेशन है, जब आप उसको, देयर इज अ कैलकुलेशन दैट इज गिवन इन ब्यूटीफुल कैलकुलेशन, कि आप उसको कंटिन्यूअस इतने इतने समय तक के लिए करते जाओगे, लाइक यू आर एबल टू सिट फॉर 1 hour, 2 hours effortlessly, you lose track of time. Like up there is a continuous flow of concentration without distraction. हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उधर तक आने के लिए आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। 5 मिनट का इस वजह से लिया है क्योंकि आप कभी बैठोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप 15 मिनट्स के लिए हम मेडिटेट करेंगे, it would become difficult. One day you would do with me, but next day then if you have to do, your mind will play games with you around कि यार 15 मिनट्स बैठना होगा, दिमाग तो घूमेगा ही, अभी मेरा दिमाग जो है स्लीपी सा फील कर रहा है, I'll do it in the night or I'll do it tomorrow or maybe I'll not do it, मैं आज वैसे भी ठीक ठाक फील कर रहा हूँ। What this 5 minute meditation, or I should say 5 minute mindfulness, awareness of your body, awareness of your senses and inwarding your senses, pratyahara, right? That प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान, प्रत्याहार करना अगर हम सीखते हैं और उस 5 मिनट की एक्टिविटी को हम हमारी लाइफ में अगर उतारते हैं, whether that is the kind of meetings that we conduct or whether that is the kind of different breaks that we take in a day, तो आप उस 5-5 मिनट करके आप 30 मिनट्स की मेडिटेशन कर सकते हो। आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से बना सकते हो। So yeah, that gives a very good start, and thank you Gayatri for asking a wonderful question. That gives a very good start for us today कि हम ये करना क्यों चाहते हैं, and ये 5 मिनट की मेडिटेशन क्या है। We'll do the actionables. I'll take another, I think, 5-7 minutes on describing on the topic और इसका लीडरशिप से क्या कनेक्शन है, लीडर्स इसको करते हैं का क्या मतलब है। We'll come to that. I'll just go to the chat box if there are any more comments.
I'll go from down. So would you say that mythological Maharishis had mastered dhyana? I would say they had mastered dhyana. They used to enter into the state of samadhi. And I'm not talking about samadhi in the way we know samadhi. हम usually सोचते हैं ना कि वो उसने अपनी body छोड़ दिया and they went. No, I'm talking about जब ध्याना वाली जो स्टेज है, ध्याना वाली स्टेज में there is still an object. There is still an object जो कि आपका एक जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. समाधि वाली वो एक स्टेज आती है जब that object is also gone. So it is difficult to describe in words. But that object, let's say आपका breath वाला जो conscious था, वो object भी जा चुका है and everything, like whatever is nothing. Like there's nothing in the mind, but it is everything. And the boundary between your body, your mind, with the universe, with the cosmos, that everything is gone. तो उस मैं बोलूंगा उन्होंने वो मास्टर किया होता है. Yeah. Why would someone meditate so much that they don't survive? No, Prabhas, I don't think. No, 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 no. That's what I'm saying. You're getting the samadhi wrong. आप जब हम समाधि को सुनते हैं तो समाधि हमने वो वाली समाधि मान रखी है. अ, समाधि को इस तरीके से समझो प्रभास. So, so it is not our topic today, but people are having questions, so why not start from there, get into it, and then we get to our topic. समाधि में क्या हो रहा है अगर हम वैसे देखें समाधि में इंसान जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो दैट पर्सन इज डेड राइट दैट इज गॉन और जो इंसान के अंदर की आत्मा है जो सोल है दैट हैज गॉन अवे इट इज फ्री फ्रॉम दिस बॉडी. Now, the kind of samadhi that I am talking about, that is written in our Yoga Sutras, and the rishis or a lot of enlightened people or a very advanced yogi has mastered, that is something that while living in this body, they are free. Their soul is free. That soul is free. How? कि वो अभी जब वो मर गया था तब उसकी सोल निकल चुकी है and it is now part or it is part with the universe and whatever mythologically जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि वो कहाँ कहाँ जाती है कहाँ जैसे जाती है जीते जीते अपने सिर्फ इस माइंड को एज अ टूल यूज करते हो यू गो इनटू डीपर स्टेट्स ऑफ माइंड एंड डीपर स्टेट्स ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस दैट यू हैव अटेन्ड दैट. और समाधि में गए और समाधि से आप बहुत जल्दी वापस आ गए. जल्दी से मेरा मतलब है वो समाधि कई बार 3 3 4 4 hours a person is sitting. Vivekanand was known to be meditating and he used to go very easily into samadhi. He would sit, he would get into meditation, close his eyes, and suddenly there are just people sitting and they would start moving out because he was teaching meditation and he himself went into samadhi and he came back. So yeah, that is not the kind of sense that we are trying to make samadhi jo hai, wo, it's not that. Okay, let me go to the questions. Oh, there are a lot of questions. Prabhas has asked, what is the difference? Hey, hi Ketan, what is the difference? I think if you have asked about difference between pratyahara and dharana, dhyana, then I've answered. If you have anything else, you can write in the comment. Jyotish, you have to forget about materialistic world. You mean you don't have to forget about it. मतलब इसमें भूलने जैसी चीज नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि हम कॉन्शियसली उसके बारे में भूल रहे हैं. प्रत्याहारा बस ये हो रहा है कि जैसे ही आप स्लीप के बारे में सोचो ज्योतिष, व्हेन यू स्लीप डू यू फॉरगेट अबाउट द आउटर वर्ल्ड? लाइक इज इट लाइक आउटर वर्ल्ड डू यू फोर्सफुली फॉरगेट कि नहीं नहीं है ही नहीं, ये दुनिया नहीं है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, ये रूम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, ये रशिया यूक्रेन का वॉर, ऐसा नहीं होता है. द माइंड which this object of knowledge, जो भी हमारे नॉलेज दिखती है, नॉलेज कहाँ से मिलती है? हमारा एक इंटेलेक्ट है और हमारे सेंसेस है राइट. हमें आंखों से जो भी अभी दिख रहा है, मुझे लाइट दिख रही है, रूम दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, ये फोन दिख रहा है, जैसे ही मैं इस सेंस को इन्वर्ट करता हूँ, इन आंखों को बंद कर लूंगा, मेरे सामने ही नहीं. सो गेटिंग इनटू दैट, तो आप ये सारे सेंसेस बंद भी कर लोगे. तो अभी करंट जनरेशन की, या मैं बोलूँ इस मॉडर्न टाइम की, कोई भी जनरेशन हो चाहे, सबकी प्रॉब्लम क्या हो रखी है? वो ये हो रखी है कि सारे सेंसेस बंद भी कर लोगे तो ये दिमाग का सेंस कैसे बंद करोगे? ये तो इसकी जो इंद्रियां हैं
इसके अंदर तो थॉट्स चलती रहती हैं, वरीज चलती रहती हैं, इसको नहीं भुला सकते हो आप. सो बाय अ कांस्टेंट प्रैक्टिस, like a 5 minute mindfulness practice, by a 5 minutes pratyahara, inverting your senses, and we'll do it today. You'll see what is it and how does that go step by step. Okay, so pratyahara is controlling your body functioning, as in, uh, yeah, you can say that. And I'll just not say body functioning, I would say it more of a sense functioning. Body functioning तो बहुत सारे part हैं, right? Body के cellular function है, बहुत सारे function है, so I'm not talking about that. Okay, what is pratyahara, like Srinathan had asked? We'll do it, Srinathan. And sorry, I just keep losing track of questions. Is dhyana like so much effort that you don't know time? No, dhyana is effortless concentration. Dharna is effort. And leave around losing track of time or something like that. वो तो हमारा experience है. यार, आप गेम खेलते हो, कोई आपको गेम बहुत ज्यादा पसंद है, बचपन में नहीं होता था, गेम हम खेलने लगे और 4 4 घंटे निकल गया और लग ही नहीं रहा है कितना टाइम निकल गया. क्यों था ऐसा? माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था. यू आर रीडिंग अ बुक and you are so engrossed in that book, 4 hours will go by or 3 hours will go by and you would not know the track of time. तो ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करते हुए आपका you lose track of time. In whatever activities you are so much attentive, you're so much concentrated, you are so much involved, and what you of course like to do. Meditation easy नहीं है करना, इसलिए people don't like to do it. But whatever you like to do, you're so engrossed. एक psychological term है, it's called flow. फ्लो को मैं बोलूंगा ध्याना है. फ्लो इज दैट ध्याना. ये फ्लो बन गया है. Okay, okay, we have still not reached to our topic. Let me quickly address the questions again. Is dhyana so much? Okay, so would you say I've covered that? What is pratyahara like? We'll do it today. Prabhas, like suicide, we have covered that. Why would someone meditate so much that they don't survive? Yes, Srinadan is saying yes, it's used for some sort of monuments. Okay, the word samadhi. Okay, samadhi is used for monuments. Okay, I don't know. I don't get it what you're saying, but okay. Prabhas, even I've heard about Vivekananda. Yeah. So Pratyahara is controlling your body. Yeah, yep, like ancient monuments. Okay. So Srinathan, I do not have idea about that. Uh, कि किसको किस नाम से दिया हुआ है, बट आई थिंक समाधि का आप मीनिंग पढ़ेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ डेथ is not the end of it. Okay, guys, let's begin. Let's talk about this. Leadership की बात कहाँ से आ रही है इसमें? What is this about leadership? So before I had started about this 5 minute thing, we were talking about कि एक लीडर के लिए to be able to manage their team, to be able to lead their team, to be able to I would say effortlessly manage the project. So whatever work that has been given to them, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक तो अपनी टीम जो है उसको तो अपलिफ्ट करे ही करे. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. हाउ यू ब्रिंग प्रोडक्टिविटी, हाउ यू ब्रिंग मोटिवेशन, हाउ यू एम्पैथाइज, हाउ हाउ कंपैशनेट यू आर, एंड हाउ यू नो मैनेजर और लीडर में जो डिफरेंस होता है कि मैनेजर जो है वो तुम्हें माइक्रो मैनेज करता है और लीडर जो है वो तुम्हें अपलिफ्ट करता है. Like they give you opportunities, how you make your team accountable. सब करने से पहले to be able to do that, you would need to be able to practice that on yourself. वह प्रैक्टिस कैसे करोगे? वह प्रैक्टिस ऐसे करोगे जिस टाइप की हमने अभी बात की है, जब आप खुद अपने माइंड, खुद अपने बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करने की, डिस्ट्रैक्शन से हटाकर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे. होगा क्या इससे? होता यह है कि इन एक्सपीरियंस व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज विद योर माइंड, व्हेन यू ट्राई टू काम डाउन, स्टिल द माइंड. इनफैक्ट रात में, रोज रात को 10 बजे मैं स्लीप स्ट्रीम कर रहा हूँ, स्लीप सेशंस, वेयर वी ट्राई टू काम आर एक्टिव माइंड, जो पूरे दिन भर में वरीसम था, हम बहुत काम कर रहे थे, सब कर रहे थे. वी डू सिस्टमैटिकली, वी डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वी डू स्ट्रेचेस, एंड वी डू सम अफर्मेशंस. उससे क्या, हम दिमाग को शांत करते हैं, इस दिमाग की टेक केयर करते हैं. उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि आपको एक, रात की बात हो रही है तो एक अच्छी स्लीप आएगी. अगर एक अच्छी स्लीप आएगी
तो you will wake up fresh in the next morning and you will have better ideas. Your mind will have some space. So जब आप meditation, mindfulness regularly करते हो और यही चीज आप अपने काम में लेके आते हो, यही नहीं कि आप अपनी पर्सनल स्पेस में कर रहे हो, when you bring this bring this experience and practice into your own work, then you see what kind of changes that happen. एंड उधर से होता क्या है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो राइज होने लगती है। आप जब अवेयर होते हो खुद अपनी बॉडी के, खुद अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के, फेशियल मसल्स के, जॉ के, कंधे को लेकर के, या पूरी कोई बॉडी पार्ट को लेकर, पेन को लेकर के, कहाँ पर आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, when you get to know that there is an awareness, you train your own awareness to be aware about different parts of your own existence. जब ये सेल्फ अवेयरनेस आपकी राइज होती है ना, जो कि इजी नहीं है राइज होना, देन यू ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग अवेयर अबाउट योर ओन माइंड। जब आप अपनी थॉट्स के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में या अपने फियर्स के बारे में अवेयर होने लगते हो, when you start disassociating with it, that you don't relate to it कि मैं अभी घबराया हुआ हूँ या अभी फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, when you disassociate, what meditation gives you, what insight it gives you is that it gives you that ठहराव कि यार आप किसी भी चीज पे हेड ऑन आने से, like if anything adverse comes to you, your first reaction will not be a knee jerk reaction. It would be more like you would be able to take a pause and then see it as it is कि क्या ये इतनी कोई भी चीज, let's say something negative has happened to you, or let's say आपकी टीम में कोई प्रोजेक्ट हो रहा है और उस प्रोजेक्ट में some co-worker has or some colleague or maybe your junior has not done the work properly, what can be your reaction at that point of time? From which angle or from which perspective will you try to understand? वो अवेयरनेस जो है वो ऑन द रोल, ऑन द जॉब खुद नहीं जागेगी, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड प्रैक्टिस टू इट। ओके गाइस, ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट इनटू इट एंड वील हैव टू प्रैक्टिस दिस टुगेदर। आइडिया ये है कि 5 मिनट, वील टेक 5 मिनट्स, 4 मिनट्स भी हो सकते हैं यार, 6 मिनट्स भी हो सकते हैं, लेट्स नॉट हिंज ऑन दैट टाइम। आइडिया इज टू हैव different breaks within your day and you are able to disconnect yourself from the outer world and see what's happening inside your body to be able to develop better awareness. Okay, get the point? वो करेंगे कैसे, वो सीखना बहुत जरूरी है और आपको अपनी टीम को भी सिखाना है। आपकी जिस टाइप की मीटिंग्स होने वाली हैं वो आप अपनी टीम को सिखाओगे, you'll be teaching it. And I've done a stream about it, that how you can have mindful meetings and how revolutionary and how transforming can they be for you and for your company and for whatever work that you're doing. ठीक है, सो एवरीबडी वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको एक एक लेयर बाय लेयर समझेंगे एंड आई हैव रिटन मास्टर, मास्टरिंग इट, वी कैन मास्टर इट, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज पे आपको ध्यान देना है, इसका एक सिस्टम क्या है एंड हाउ यू कैन कीप अ चेक। और हर दिन में अगर आप इसको 3 या 4 बार करते हो, अगर आप एक दिन में 15 मिनट 20 मिनट की सिटिंग नहीं ले पाते हो मेडिटेट करने के लिए या ब्रेथ पे फोकस करने के लिए, मेडिटेट वर्ड ब्रेथ फोकस सब सेम है अभी के लिए, okay, then what can you do within these 5 minutes to be able to uh, generate the benefits of long meditation? Okay, great. ठीक है, so we'll have to practice it together. If you're sitting on your chair, then get your spine straight. अगर आप बेड पर लेट करके ऐसे स्ट्रीम को देख रहे हैं तो I would request you to sit, not lie down. We are doing this attentively. And if you do not plan to do it, if you just want to see it, I would suggest you leave the stream, because I think your time would be more valuable if you do it with me here and not just see कि चलो जानते हैं इसके बारे में। जानना है तो आप ऑनलाइन जाके पढ़ लो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में, बट एक्सपीरियंस करके देखोगे और खुद समझोगे कि इसको मैं खुद कैसे कर लूं, खुद कैसे करने लग जाऊं। गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पर 10-10 15-15 मिनट के मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, मैं 2 मिनट के लिए भी कैसे अपने आप को एक बार ठहराव लेके आ सकता हूं अपने जीवन में, इसको हम करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ यू आर सिटिंग on your chair,
or if you are sitting anywhere else, find a comfortable space. If possible, then try to find a quiet place where there is no one else. If it is not possible, that's totally okay. Plant your feet solidly on the ground such that there is an activation in your calf muscles and in your thigh muscles. Roll your shoulder backwards, open your chest, inhale and release. Release your shoulders. Keep your spine straight. Don't need to stress your spine, but just rather than having a hunched back, bring activation in your spine, bring alertness in your spine. Sit straight. You can remove your glasses. We have already started, and this is part of our 5 minute meditation. Gently close your eyes. Bring both your hands on your knees or on your thighs. You can also keep your palms facing towards the sky, whatever is comfortable to you. If your jaw is tightened, then relax your jaw, let it fall down. Do not clench your jaw. Relax your facial muscles. Keep a gentle smile on your face. Relax your eyebrows. Relax your forehead muscles. If you feel that your eyebrows are strained, then you can use your fingers to massage your eyebrows and to massage your forehead muscles. Take a deep breath in and exhale. Take another deep breath in and exhale. This time, when you inhale, then try to inhale as slowly as possible and as deeply as possible. Inhale and exhale. Now, gently bring your senses, your sense of hearing, towards the sensations that are going inside your body. Slowly and slowly cut down your connection with your surroundings, with your environment. If you're hearing any kind of sounds or any noise, if you're feeling the air, slowly cut down and bring your awareness towards what's happening inside. As a starter, you can bring your right hand on your chest above your heart
And you can use the sense of touch and sense of hearing to feel your heartbeat, feel the pace of your heart. Keep breathing. Now, while you inhale, observe how your heart starts beating faster. And as you exhale, notice how the heartbeat slows down as you relax. Make sure there is activation in your legs, your calf muscles, and your thigh muscles are activated but still relaxed. The back is straight. Take a deep breath in again and exhale. Now you can release your hand, bring it over your knees. Now you bring your left hand to the center of your chest and your right hand on your stomach. We will again feel what is going inside our body. If you feel any pain in your neck or in any part of the body, just notice that. Your awareness is pointing you towards a whole new world inside your body. Take note of it. Keeping your left hand on the center of your chest and your right hand on the abdomen. We will start inhalation and exhalation. Just observe that as you inhale, your stomach goes out, your hand moves with the stomach, then the air gets filled in the chest, your left hand moves a bit up, and you completely inhale. And as you exhale, your left hand starts going down as your lungs collapse, and then your stomach goes in, and that's a complete exhalation. We'll do 3 rounds of it. Okay. Keep complete observation and complete awareness of how your body moves and how your body breathes, how your diaphragm moves down, how your body mechanics work. Just to take a simple deep breath. Get ready. Inhale. Exhale. Let it flow like a rhythm. Inhale, stomach goes out, chest goes out. Inhale deeply and exhale. Release both your hands. Bring your hands on the knees. Take a deep breath in. Catch the air. Feel like. Do you feel a better connection with your body, with your heartbeat, with the sensations in your muscles? Now watch your head. Watch your mind. Retain this stillness and calmness of the mind. But if there is any thought,
If there is any disturbance in your mind, and just bring back your awareness towards your breath. Keep a focus on how your inhalation goes through your nostrils and how exhalation also passes through your nostrils. Whenever there is a thought, whenever there is something that mind invents, bring back your attention. We'll stay here for 1 minute in all the silence. Gently bring your awareness from your breath towards your senses. Gently unfold your senses towards the environment, towards your surrounding. Gently open your eyes. Look at the surroundings. Retain your mindfulness. Rub both your hands. Generate enough heat. And apply it over your eyes. You can do it once more if you want. And apply it over your eyes. Welcome back, everyone. How did you feel? If you want to take a bit time, then you can. And then I will explain you the process, what we did, what was pratyahara in it, what was dharana in it. We never reached to dhyana. Sorry. If we are able to master dharana over these small, quick sessions of 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes, we'll be able to enter, we'll be able to start with dhyana soon in our lives. Great. Gayatri, you're saying, how did you know the jaws could be tight? Also, facial muscles, almost like you knew. It's very common for all of us. So, one of the uh, subconscious way of body to deal with stress or to deal with anxiety is to be always in the fight kind of a response, fight and flight response that comes with stress, keeping our jaws tight. This happens a lot in the night. There's a grim, and you'll see there's a grimness on the face.
And this is always the mind. When हम देखते हैं ना कई बार कि there's a frown on the face when we are angry or when we are disgusted, or there is there are a lot of emotions uh, which are uh, conveyed through our face. Similarly, stress is conveyed through the uh, muscles, facial muscles, or our forehead muscles being tightened. And this happens over time. It's not that today you are stressed, so you'll clench your jaw. It becomes a coping mechanism for our body. That, okay, I'll do this. If you will see your muscles are, if you do not, let's say, exercise, or if you do not do a regular activity, you would feel that most of our muscles are tight, because the stress gives that, always keep them on edge, that hey, there is a problem, there's a 24-hour problem, you have to be alert, you have to be tightened, it does not let you release. So yeah, that is uh yeah, Raghav, it is a sign of stress. Yes, they remain tensed, especially shoulders. Yes, and that was one of the reasons why we uh rolled our shoulders backward, opened our chest, and then we released it. Because sometimes, if you'll see, usually people, either the shoulders are hunched, they're too relaxed, it's a posture. I've done a stream again in the past about it, that how a postures like this, a hunched posture, is not only a recipe towards mental health problem in future, or like anxiety or depression. It also leads to low self-esteem. Like our body postures dictate a lot of our psychological well-being. So it talks about your self-esteem, your self-confidence, and all that stuff. And for being a not only a good leader, good manager, or good person, these are some of those traits, part of your personality, which comes in. And if you see mind, if that mind is at rest, if that mind is relaxed, if it is not stressed, there are a lot of uh, uh, physical conditions that this mind controls. It would control your posture, it would control your personality, it would control, you see, the basic things that it controls. Okay, what's the point of all it? What's the point? Why did we do? What did we achieve by doing this? If anybody wants to write, uh, what did they achieve by doing this 4 5 minutes of contemplation? I should not say contemplation. We did not contemplate. Sorry, my bad. This 4 5 minutes of inward attention, mindfulness. What did we achieve? I'll tell you what I felt, and what whenever I do, what do I feel? I feel more in the present moment. Before I was, and I could also feel, see that before we started this uh, session, the meditation session, when I was speaking, I was a bit fast, and I tend to be fast usually. I was a bit fast, I was being quick, and uh, there was some sense of bit anxiousness. But when and it has happened naturally, that when we did this session, now I myself feel a bit calmer. I'm still on the stream, I'm still sharing the ideas, I'm still talking to you, but the uh, way is more soothing, at least it feels to me. It's more slow, but the content is still the same, what I'm delivering. So yeah, that's what I felt. uh, okay, Jyotish has written, I felt my circulation. Wow, wonderful. बॉडी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं ना, ये तो एक जैसा हमने एक छोटी सी मेडिटेशन की है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड योगा निद्रा. It is a fancy term now in US. It's called NSDR, non-sleep deep relaxation. So basically, you do not sleep, but a 30-minute of listening to the audio and rotating your awareness in different parts of your body gives you the relaxations of a 4 hour deep sleep. And it's being scientifically researched, and it's being proven that yeah, it is coming out to be a basic simple act of lying on a mat or lying on your bed and listening to an audio.
which is directing your awareness on different parts of your body for 30 minutes. So yeah, you are able to feel a lot of things in the body. Kate, okay, Jyotish said, I felt, Gayatri, I felt shocked that you knew about the tense muscles, but yeah, fair enough. No, no, you don't. Okay, Gayatri, you don't need to be shocked. Yeah, it is happening with all of us. That's where the self awareness part I was talking about, कि जब बॉडी की अवेयरनेस हो जाती है ना, तो आप बाहर बाहर की जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में बस हम वी आर नॉट अवेयर, वी आर जस्ट कॉन्शियस अबाउट कि हाँ कुछ हो रहा है. बट जो अवेयरनेस है, व्हेन यू हैव दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, आई नो एट ऑल टाइम्स, देन दैट गिव्स योर माइंड दैट स्पेस, एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू दैट स्किल to be able to be aware of what's happening outside and to be able to see what's right, मतलब हो क्या रहा है, not rather than responding कि अच्छा ऐसा हुआ, ये किया उसने. Rather it's like okay ये हुआ, and then you take a pause, you take a step back, and then you think okay हुआ क्या है, that kind of stuff. Raghav, to be honest, I didn't feel a thing, but yeah, relaxing, and it's okay, Raghav. It's not. Thanks for being honest, and it is not समथिंग कि सबके सिमिलर एक्सपीरियंसेस होंगे. कई बार कई लोगों को गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड डिलीवरी डज नॉट सूट. इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द इंस्ट्रक्टर. किसी इंस्ट्रक्टर की फ्लो किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए उसकी फ्लो अच्छी नहीं होती, किसी के लिए इस लेवल ऑफ डिटेलिंग जो है दे डोंट वांट. समटाइम्स गाइडेड मेडिटेशन इंटरफेयर्स विद द कैजुअल और विद नॉर्मल अटेंटिवनेस और नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन. मेरे साथ भी होता है कि मैं अपनी ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करके रिलैक्स फील कर रहा हूँ, एंड समबडी देन सेज हे नाउ डू दिस, नाउ यू डू दिस, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी टू. तो ये मेरे साथ भी होता है ऐसा. सो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नीड टू प्लग इन द चार्जर. ओके, सो अभी हम बात करते हैं इस बारे में. गिव मी अ मिनट. But if you just in case if you felt relaxed, that's a good enough thing for you. So the idea is कि ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि अगर मुझे रिलैक्स्ड फील हुआ था तो इसमें से क्या चीज थी जो कि ठीक थी, या व्हाट आई वुड लाइक टू डू. ब्रीदिंग विल मेक एनीवन रिलैक्स्ड टू बी एबल टू वॉच योर ब्रेथ. ओके, नाउ लेट्स वेरी क्विकली टॉक अबाउट कि हमने किया क्या था ये, और ये आपको लर्न कैसे करना है. लेट्स से इफ यू वांट टू स्टार्ट डूइंग इट बाय योर ओन, दिन में 5 मिनट भी अगर ये करना है, व्हाट दिस विल, जो हमने बात की कि ये डेफिनेटली इट विल गिव यू अ प्लेस वेयर इट्स काइंड ऑफ अ इंटरनल चेक. ये चेक करते रहो अभी मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, चेक करते रहो मेरी बॉडी में क्या चल रहा है. क्योंकि जैसे आप चेक करोगे तो आप एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स अगर दोगे बॉडी को, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर माइंड, फॉर योर ओवरऑल वर्क एंड एवरीथिंग. सो इट्स गुड टू गिव दिन में से. लेट्स से यू कैन डू दिस व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर वर्क. मॉर्निंग में आप अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, उससे पहले कर सकते हो आप, ताकि जो आप अभी मॉर्निंग में उठे थे, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, जाए जो भी किया, वो वाला सब एक जो जो भी माइंड का एक्सपीरियंस था, या जिस भी टाइप से आपकी नींद अच्छी नहीं हुई, या अभी आपको मॉर्निंग में यू हैड सम काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस, या कुछ भी आप लेट हो गए या कुछ हो गए, अपने काम को स्टार्ट करने से पहले इफ यू get this break, you have reset your mind towards you know like वापस स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो माइंड को कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा अभी क्या हुआ था कुछ देर पहले. ओके, हमने किया क्या था. सो इफ यू वुड रिमेम्बर व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू, एंड प्लीज दिस इज इम्पोर्टेंट टू हेयर दिस आउट एंड गेट दिस इन योर माइंड, क्योंकि इसका एक एक इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हमने किया क्या था इसमें. तो हमने स्टार्ट किया था फीट प्लांट करने से. फीट प्लांट करने से क्या होता है, अगर आप चेयर पे हो और आप चेयर पे, यूजुअली हमारी आदत क्या होती है कि दोनों लेग्स जो है फुट को ऐसे क्रॉस करके ऐसे बैठे हो, एंड या फिर वो उस पैरों को झुला रहे हैं. पहली बात तो ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा. दूसरा, वी वांटेड अ बॉडी टू बी मोर, बॉडी हमारे माइंड के
प्रेजेंस में माइंड के कंट्रोल में होनी चाहिए, so that it does not distract us. We should be aware of different parts of our body जब वो एक्टिवेटेड होंगी, जब आप उसके साथ टच में हो कि अच्छा हाँ आई कैन फील कि मेरी फीट जो है इधर प्लांटेड है, आपने ग्राउंड तो किया ही किया, बट यू हैव ब्रॉट लेवल ऑफ अलर्टनेस। तो आप कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हो अपने माइंड को, उससे पहले आपकी बॉडी को आप प्रिपेयर कर रहे हो कि ये तो करे मुझे कॉन्सेंट्रेट। वरना इस तरह मान लो आपको मेडिटेशन करनी हो हंच बैक में कि चलो अब करते हैं ब्रीथ, कुछ करते हैं, it will not give you because you have not prepared your body for concentration. So we planted our feet. Then what we did, we rolled our shoulder backwards, opened our chest. कुछ भी थोड़ी बहुत टेंशन है इधर है मसल्स में, उसको थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करी। लेग्स को भी फिर सीधा कर दिया, बैक को हमने सीधा किया। रीजन बीइंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्यू, क्योंकि उसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि कोई अलर्टनेस वाला, की बॉडी अगर अलर्ट नहीं है, कैजुअल है, तो स्टेबल नहीं है। आप 5 मिनट के लिए इस तरीके से बैठ ही नहीं सकते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेट करते हुए। सो वी गॉट आवर स्पाइन स्ट्रेट, दैट इज वन। दूसरा फायदा क्या है कि जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है तो योर चेस्ट गेट्स इनफ स्पेस टू बी एबल टू ब्रीथ डीपर। सोचो अगर आप ऐसे बैठे हुए हो, अब आपको मैं बोलूं डीप ब्रीथ करो, अलाउ ही नहीं करेगा ये। भाई लंग्स तो जो है 3 डायमेंशन में, नीचे की तरफ भी एक्सपैंड हो रही है, इधर भी एक्सपैंड हो रही है। इफ योर चेस्ट इज, अगर आपका यही पोस्चर है, ये हंच है, तो आपको इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ब्रीदिंग, इफ योर ब्रीदिंग इज नॉट प्रॉपर, इट विल नॉट हेल्प यू विद रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, इट विल नॉट हेल्प यू विद योर स्ट्रेस। आप दिन में कोई स्ट्रेस आएगा भी तो वो आप बहुत जल्दी उसको, आप ससेप्टेबल हो गए उसके लिए, क्योंकि आपका माइंड आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा होगा। सो वी डिड दिस, वी डिड आवर लेग्स, we did our shoulders, we did our spine, बेसिकली हमने अपनी बॉडी करी। फिर हमने नेक्स्ट लेवल आए हम हमारे सेंसेस पर। सेंसेस में हमने क्या किया, नोज, सूंघने का सेंस है, खाने का सेंस है, वो तो हमने वैसे भी आसपास है ही नहीं, कुछ हम खा नहीं रहे थे। इट्स गुड टू ऑल्सो कीप फूड एंड अदर थिंग्स असाइड। ऐसा नहीं कि किचन में बैठ के कर रहे हो इसको, क्योंकि इट विल डिस्टर्ब योर कॉन्सेंट्रेशन, योर सेंस विल गेट एक्टिव। Okay, you have placed your hands on your knees, and we used our touch sense from different during this concentration. तो हमने फिर क्या किया, आंखें बंद की। आंख जो है, जो आई सेंस है, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। खुली आंखों के साथ मेडिटेशन करना कभी कभी डिफिकल्ट है। माउंटेन्स में जाओगे अगर, माउंटेन्स में खुली आंखें जो है, जो जब आप वो माउंटेन रेंजेस और उधर का जो एनवायरनमेंट, जिस टाइप का पीस देखते हो, ऑफ कोर्स नॉट इन अ कमर्शलाइज माउंटेन स्पेस, बट वो वाला आप खुली आंखों के साथ मेडिटेट कर सकते हो। द रीजन देयर बीइंग इज देयर इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्टफ, there is a constancy in what you see around, and it is such huge anyway, wo I can just keep on going through, but that's not the point. The point is ki eyes are a big source of distraction. If you close your eyes, aapne like 40% 50% तो concentration की invitation already कर दी है। कई लोगों के लिए आंख आंख बंद करना ही मुश्किल होता है। डू यू नो दैट a lot of people feel so much anxiety with that when they close their eyes, they are not able to close, they are not able to do it, because once they close their eyes, their mind, now not able to see other distractions, is so much troubled that the thoughts and worries and everything will race around it. It becomes very difficult for them. So yeah, we close our eyes, we close our senses. I told you कि अभी जो आपका external environment that you're listening from your ears, any voices or any sounds, you start slowly you start cutting it down. What we were doing is pratyahara. प्रत्याहारा क्या था, प्रत्याहारा ये था कि इनवर्डिंग योर सेंसेस, ब्रिंगिंग देम इनवर्ड, कि हम बाहर नहीं फील करेंगे, अब इन्हीं सेंसेस को हम यूज करेंगे अपनी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने के लिए। ओके, दैट इज व्हाट वी डिड। देन व्हाट डिड वी डू, फिर हमने उसी में कंटिन्यू करते हुए हमारी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करने का सोचा। जॉ को क्लेंच अगर जो है उसे ही करना, इसको बोला कि इसको थोड़ा रिलैक्स करो। क्यों करने को बोला, क्योंकि अगर ये frown के साथ if you will meditate, you will not be able to, because what your mind is right now saying is that hey, there are things that I am stressed about and I'm showing it on your physical body, तो मैं अभी concentrate नहीं कर सकता because that would be overpowering. So हमने क्या किया, reverse use किया, we relaxed it whatever, and then we gave that response to mind कि hey, I'm relaxed, and mind also then started जो थॉट्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम करने लगा धीरे धीरे। वी डिड दैट। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट,
is I asked you कि आप अपने हार्ट पर अपना हाथ रखो और हार्ट बीट फील करो. That was an invitation to get your senses inwards, to make your mind have a connection with, okay, there's something going on within the body. Breath is one connection that you can use. कि deep breathing करेंगे, हमने डीप ब्रीदिंग करी थी पहले, फिर हमने चेस्ट पे हाथ रखा था. डीप ब्रीदिंग इस वजह से की थी कि माइंड को, अगेन वही, माइंड की प्रिपरेशन चल रही है, बॉडी के थ्रू प्रिपेयर किया, हमने सेंसेस के थ्रू प्रिपेयर किया, ब्रेथ के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हार्ट के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं. एवरीथिंग इज हैपनिंग जस्ट सो दैट इट इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट. एंड सोचो, अगर ये वाली कंसंट्रेशन के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं हम, अगर हम जब इसी चीज को वर्क में लेके जाएंगे, तो ये वाला जो माइंड जो अब बिल्कुल एक एक खाली किताब की तरह है, वो अब आप किसी काम में लगा रहे हो, वो कितने लेवल पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा. तो इट ऑफ कोर्स इंक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन. तो हमने अब धीरे धीरे करके प्रत्याहारा से हमने स्टार्ट किया. एंड देन वी डिड ब्रीदिंग. हमने चेस्ट पे हाथ रखा, पेट पे हाथ रखा, ये मूवमेंट्स देखे, to get more acquainted with our body, to get more to get more in touch with our own being. ये हमने किया. लास्ट जो हमने किया वो था धारणा. धारणा क्या था? कंसंट्रेशन, एफर्ट. एफर्ट लगाया कि माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो वो कैसे लगाया एफर्ट? किया मैं ब्रेथ पे ही फोकस करूंगा. हमने लास्ट 1 मिनट में राइट यही किया था, दैट वी विल आई वुड लाइक टू फोकस ऑन माई ब्रेथ एंड आई वुड नॉट लेट माई सेल्फ डिस्ट्रैक्ट. कोई थॉट आएगा तो मैं एंगेज नहीं करूंगा, मैं माइंड के पास जाऊँ. कोई थॉट आएगा तो मैं माइंड के पास मतलब ब्रेथ के पास अपना फोकस होगा. सो दैट वाज अ फोर्सफुल एफर्ट. यू कैन डू दिस क्विकली, लाइक विद इन 2 मिनट्स. यार मुझे अभी काम से मैं 2-3 घंटे हो गए, मैंने ब्रेक लिया, या कोई स्ट्रेसफुल मीटिंग थी, उसके बाद अब आपको काम रिज्यूम करना, और वो उस मीटिंग के जो थॉट्स हैं, उस मीटिंग के जो भी इंप्रेशन है, दैट यू आर नॉट एबल टू यूज दिस. हर बार 5 मिनट अगर ज्यादा लगता है तो 2 मिनट के लिए कर लो. 2 मिनट में अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया, सब कुछ किया, माइंड बंद किया, फेशियल मसल्स को रिलैक्स किया. गेट दैट नरेशन, गेट दैट कॉमेंट्री. यू कैन ऑल्सो स्पीक टू योर सेल्फ. माइंड में बोल तो सकते ही हो, बट यू स्पीक टू योर सेल्फ स्टेप बाय स्टेप. When you speak this step by step to yourself, whether in your mind or by vocalizing, you are yourself giving yourself the cue. भाई खुद ही अपने गाइड बन रहे हो आप. गाइडेड मेडिटेशन आप यूज कर सकते हो, बट अगर किसी को नहीं यूज हो रही है तो ट्राई टू डू दिस. तो ये हुआ. उसके बाद हमने, जब ये हमने एक धारणा किया कुछ देर का, इफ यू लाइक इट, गो ऑन फॉर मोर टाइम. अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे, गो ऑन फॉर 10 minutes, go on for 7, 10, 15 minutes if you are able to do that. Anyway, then we come back. हमने पीछे आए, हमने ब्रेथ से फोकस हटा के धीरे धीरे जेंटली भी जो हमारे सेंसेस इनवर्ट थे, हमने उनको बाहर की तरफ किया. हाउ डू वी डू दैट? थोड़े कानों के थ्रू हम बाहर के एनवायरनमेंट को थोड़ा देख सुनने लगे. धीरे से जेंटली आंखें खोली, देखा. वी केम बैक इनटू इट. आई आस्क्ड यू टू लुक एट द एनवायरनमेंट बाय this set of eyes now, and that would have made difference. It may not have, but that we did. हमने वो इसलिए किया कि अब एक बार डिफरेंस तो देखो यार. ये डिफरेंस देखो कि जब आप स्ट्रीम में आए थे तब आप अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि कहाँ बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ. हो सकता है दे रहे हो, बट मोस्टली नहीं दे रहे होते. कहाँ है, क्या हूँ मैं, मेरा करेंटली मैं प्रेजेंट कहाँ हूँ, किस तरीके से बैठा हूँ. अब आप बहुत अलर्ट हो. विद इन दैट 5 minutes यू आर वेरी अलर्ट. एंड when I say that leaders use this 5 minute meditation, this is what they do, that they include every time when they are taking in meetings, they are taking in any crucial projects, they do this breathing. जो ये डीप ब्रीदिंग है, द करेक्ट ब्रीदिंग है, देयर, जैसे बोलते हैं कि अपने मोमेंट में वो प्रेजेंट होते हैं. दे डू नॉट ब्रिंग इन देयर थॉट्स. जो माइंड में रेसिंग थॉट्स है, दे डू नॉट ब्रिंग इट विद देम. दे जस्ट डू what their current present is allowing them to do. वो वाली इंसाइट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ट्रेन करनी पड़ेगी, जो कई लोगों के साथ नेचुरली आती है. दे हैव anyway practiced it with their own routine, discipline in life, and all that. So yeah, this was a step by step thing to understand ये क्या था, ये break था. And yeah, this is what we did. I'll go on to questions, and if you have any questions, of course you can ask. And if you can yeah, if you have anything else, you can ask. I'll look at the other questions. If you like this stream and want to check out more, please follow this channel. And in the night, I am doing, as I said, कि हर रात को, and there are good number of people who are joining it. We sleep एक बहुत बड़ा problem है.
मान लो आप 5 मिनट की मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट स्लीप पे अपने काम करने लगो। तो उसी चीज के लिए वी आर डूइंग दैट इन नाइट, एंड डूइंग ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इन द नाइट आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू हैव क्विक स्लीप एंड अ क्वालिटी स्लीप। मैंने पुरानी स्ट्रीम्स की थी, एंड आई वाज शॉक्ड टू फाइंड आउट दैट most of us are suffering from very irregular sleep or low, you know, disturbed sleep, low quality sleep. तो उस चीज पर है, यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो, विल बी डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगेन, यूल सी व्हाट वी डिड टुडे, वो उसका एक छोटा सा पार्ट होगा उस, या यू कैन जॉइन दैट टू, या एंड if you liked it, follow the channel, and I'll now read the comments. Okay, Srinathan, yes. Jyotish, to be alert, yes. Raghav, yes. We breathe is definitely important. How we breathe is definitely important, very important. Uh, Gayatri, yes, true. You'll keep worrying, yes. I think you guys were writing in the comments while I was saying. So, yeah, makes sense. Prabhas, important to meditate, especially when you are tensed. Prabhas, it is important, but you will find that when you're especially tensed, तब आपके लिए मेडिटेट करना डिफिकल्ट होगा यार. इट वुड नॉट बी इजी. व्हाट वी आर सेइंग, सोचो हम बोल क्या रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि आपका दिमाग में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो रखा है, बहुत ज्यादा वरी हो रखा है, इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, दिमाग बहुत परेशान है. और हम बोल रहे हैं सुनो, शांति से बैठो, सांस लो, और दिमाग को शांत करो. ऐसा थोड़ी होता है, नहीं हो पाएगा. इट वुड बी डिफिकल्ट. सो that is true that meditation will help when you are tensed or when you are stressed, but it will not work. Meditation will always fail if you do not have the practice, of course. अगर आपके पास practice है, then you know your zone कि यार मैं tensed हूँ, I need to let it go or let it out. और लोगों ने अपने अपने coping mechanism बना रखे होते हैं tense के लिए. कई लोग smoke करते हैं, कई लोग ओवर ईटिंग करते हैं. ये जो अनहेल्दी हैबिट्स हम डेवलप करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने हेल्दी हैबिट डेवलप नहीं की है. तो अनहेल्दी हैबिट जो इजीली अवेलेबल है, अगर मेडिटेशन दुकान पे मिल रहा होता कि यार 5 मिनट का मेडिटेशन है, लेट से कोई न्यूरा लिंक बना हुआ है, डाला कैप्सूल और मेडिटेट हो गया, तो शायद लोग यही कर रहे होते हैं. फिर शायद सिगरेट नहीं खरीदते या कुछ और नहीं खरीदते इन जनरल और चीजें. तो कई लोगों के लिए वॉकिंग, रनिंग, गोइंग फॉर अ लोन वॉक, और listening to music, these are ways to reduce their tension and stress. But again, these are coping mechanisms. Meditation is something that अगर आपने वो प्रैक्टिस बनाई हुई है, तो जब भी कोई आपके ऊपर स्ट्रेसफुल टेंस एनवायरनमेंट आएगा, तो आप स्ट्रेस तो वापस आओगे, टेंस आओगे, बट उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी नहीं होगी, एंड यू विल स्टिल बी एबल टू फाइंड अ वे आउट अराउंड इट. अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, हपड़ जबड़ हो जाएगा, वो फ्लाइट एंड फाइट मोड आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा. दैट वुड हैपन. सो एक आई थिंक कहावत भी है ये कि वॉर वो जीतता है जिसने पीस टाइम में अपनी सारी सप्लाईज और वॉर की प्रिपरेशन की. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो वॉर के टाइम में, जिसने पीस के टाइम में बैठा रहा और उसने सोचा कि यार हाँ पीस चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, जैसे ही वॉर आया तब तैयारी करने लगा, तो वॉर हार जाएगा. सेम हमारे साथ है, हमारी सिचुएशन में, कि अगर हम, जब तक हमारी लाइफ में ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं है, वैसे तो है बहुत कुछ, बट इफ इट इज नॉट देयर एंड वी थिंक कि oh when this has come now I should meditate, we will lose it because we'll not be able to do. Okay. um, Meditate, yes, maybe if you do it more often. Thanks for this. It was nice doing this. Thank you, Jyotish. Thank you. And from my side, the stream is over, guys. Like, if you want to go out, thank you so much for joining in. I'm just reading the comments. If you think any comment you want to stay for any answers, if there are any questions, then you can stay. Otherwise, thank you so much for joining in, and I hope you liked it. And प्रैक्टिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस. आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहते हो, स्लीप सेशंस में आओ, यू विल गैदर मोर प्रैक्टिस, क्योंकि वो सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड है, उधर हम ज्ञान की बातें नहीं करते, वी जस्ट डू द एक्शन. ओके, बाय. सो बाय एवरीवन हु इज लीविंग, बट आई एम रीडिंग द कमेंट्स, एंड फॉलो कर लेना. यस, इट वाज नाइस. Raghav will try to meditate more often. More power to you, Raghav.
hope that works. Gayatri, yes, true. Maybe it's the challenge to meditate when you are tensed. Yeah, yeah, yeah. It's a challenge to meditate when you are tensed. True. Yes, practice and get there. True. Srinathan, yes, that's fair. Prabhas, you just have to go now. Thanks for the session. We'll practice. Okay, Prabhas. Bye. Take care. And everyone here, thank you so much. Thank you for your time. I hope you have a good day ahead and keep practicing it. And yeah, anything else? No, that's it. Chalo. Bye. Bye, Raghav. Bye. Take care.